Namaskar. Good evening, viewers. You are watching House Highlights on Sansad TV. I am your host Rajiv Kumar Singh. After 2 days of almost normal functioning, both houses of Parliament again witnessed disruptions on Thursday. In this program, we will take a look at all that transpired during the proceedings on the 9th day of the winter session. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. French newspaper report on organised crime and corruption reporting project rocks Indian Parliament. BJP accuses Congress and other opposition parties of attempting to destabilize the country's parliament, government and economy through foreign organizations. Parliament passes the Bharti Vayuyan Vidhayak 2024. Rajya Sabha gives nod to the bill that provides for regulations on aircrafts. Those guilty of faulty construction in the Delhi-Mumbai Expressway will not be spared, assures Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari. Stresses there would not be any compromise on quality. Proceedings in the Lok Sabha began with the question hour on Thursday. Replying to a question on technical flaws in the construction of Delhi-Mumbai Expressway, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that there would not be any compromise in quality and those responsible for any flaws, be it any contractor or any official, will be taken to task. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश का पहला लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और जो सबसे कम समय में ग्लोबली बनाया गया। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है और इसमें से दिल्ली से मुंबई ये 12 आवर्स में हम जा सकेंगे और 200 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हाईवे जो बनाया गया है, ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये परपेचुअल पेवमेंट विथ वेरिंग कोर्स ऑफ SMA में स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट वाज यूज्ड। ये अमेरिका में यूज़ हुआ था एक्सप्रेस हाईवे में। इसका पहला प्रयोग हिंदुस्तान में हुआ है और इसलिए इस कॉन्ट्रैक्टर की जो गारंटी पीरियड है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो 10 साल का है। ये दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स अक्रॉस USA एंड यूरोप एंड प्रोवाइड सुपीरियर राइडिंग क्वालिटी दैन सीमेंट, कंक्रीट एंड अल्टरनेटिव। सीमेंट में जो पेमेंट होता है वो हार्ड होता है और इसमें जो बिटुमिन है उसके कारण टायर ढककर एक कंफर्ट्स मिलते हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। 10 साल इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है। आफ्टर नोटिसिंग डेफिशिएंसीज, हमने IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर दोनों को अपॉइंट किया था। Initial findings of the investigation show that there are deficiencies in the SMA layer. ये जो SMA layer है, इसमें टायर जाने के बाद कुछ जगह पर वो दब गई है। तो but all the below layers are intact and up to the mark. इसके नीचे वाली layers जो थी वो बराबर है। ये जो SMA layer में फ़र्क आया है, उसमें मटेरियल में बदमाशी नहीं हुई है, पर कुछ जगह पर वो रुकी है, ये नीचे ज़रा दब गई है, ये ध्यान में आया है। और थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल बिटुमिनस लेयर्स वेयर वेरिंग बट द ओवरऑल थिकनेस वाज द सेम एज पर द डिज़ाइन। इसके बाद में हमने उसको सुधारने के लिए उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने सुधारने का काम किया है। ये पहली बार ये वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया है। इसके बावजूद भी 10 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जानबूझ के इसलिए रखा गया था कि इसमें कुछ पहली बार प्रयोग करते समय कुछ कम होगा तो करेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से 10 साल तक सब डिफेक्ट को सुधारेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है और उसका काम भी शुरू हुआ है। 3 महीने के अंदर लगभग पूरा काम हो जाएगा। इस विषय में जहां ये लेयर में फ़र्क आया है, इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके मार्फत सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वैसे मैंने अभी तय किया है
कि लोगों को सस्पेंड करना, ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करके जो काम के लोग ने उनको निकालना और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना, ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, ये विश्वास मैं सदन को और सम्मानित सदस्य को देना चाहता हूँ। BJP member from Odisha, Bhartari Mehtab, asked a question related to the development of new airports. Answering to his supplementary question, the Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu stressed on the multiplier effect of civil aviation jobs, which according to him can go up to 15 times in a country like India. International Civil Aviation Organization ICAO study shows that the air connectivity has an economic multiplier of 3.25 and employment multiplier of 6.1. My question is, will the minister let us understand the total increase in operational airports since 2014, the impact of widespread and affordable air travel on general population from Tier 2 and Tier 3 cities? Sir, I will give you a general picture from 2014. What were 74 airports in 2014? Now, in the last 10 years, we have expanded the whole airport network to 157 airports, sir. And I can proudly say that India has reached that passenger capacity limit where they have crossed 5 lakh passengers in one single day. This is a great achievement and a great milestone for the Ministry of Civil Aviation, and we take great pride in that. With the improvement of the network, we have created, the more number of passengers have come into this air travel network, sir. And honorable member has specifically asked regarding the job creation multiplier and the economic multiplier. The numbers have already been mentioned, but one important statistic that I would like to give, sir, if you look at the Chennai airport is being built in 1350 acres, and the daily passenger movement is 72,000 there. And for 72,000 people moving every day, the kind of job creation Chennai creates today is 20,000 direct jobs. And with the multiplier effect, so one direct job being created in aviation sector results in up to 6 more jobs, either direct or indirect, within the aviation network, sir. And if the ICAO studies the multiplier effect, which is 6.7, in countries like India, the multiplier effect can go up to 15. So if I'm saying 20,000 jobs being created in Chennai airport itself, the indirect jobs can be up to 1.2 lakhs to 3 lakh jobs. So you can imagine with the number of passenger movement that is happening in all the airports, and we have created 80 airports, sir, in these Tier 2 and Tier 3 city networks. So when the passenger movement is there, obviously the job creation also subsequently will happen. And for the specific figure, I'll give it in writing to the honorable member, sir. Lok Sabha Speaker Om Birla on Thursday appealed to the members to uphold the dignity of Parliament and ensure adherence to its rules. He urged members not to enter the House wearing badges or similar items. Citing Rule 349 of the Lok Sabha, the Speaker clarified that only the national flag is permitted as a lapel pin. He emphasized that it is the responsibility of all members to follow the rules to safeguard the decorum and functioning of Parliament. माननीय सदस्यगणों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप संसद की मर्यादा, नियम, प्रक्रियाओं का पालन करें ताकि हम संसद की मर्यादा को बढ़ा सकें। हमारे कुछ पालनीय नियम भी हैं, उनका भी माननीय सदस्य पालन करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि लोकसभा के नियम प्रक्रिया संचालन नियम 349 के अधीन कोई भी माननीय सदस्य लेपेलमीन बिल्ले लगाकर नहीं आ सकते, केवल राष्ट्रीय ध्वज के अलावा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद के नियम प्रक्रियाओं का पालन करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, अगर हम संसद की गरिमा, प्रतिष्ठा, उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सदन की गरिमा गिरेगी और हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके के बिल्ले बेच लगा कर आएंगे। आप राष्ट्रीय ध्वज को लगा के आएँ, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन और तरीके के लगा कर नहीं आए। मैं इसके लिए आपको आग्रह करता हूं और इसको पालन को करें।
सभा वो भी लगा के आएंगे तो उनको भी मना करेंगे, किसी तरह के लगा के आएंगे तो मना करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। A French newspaper recently published a report regarding the OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, claiming that the OCCRP's report is not neutral and is funded by American businessman George Soros. Based on that report, the BJP has accused the Congress and other opposition parties of attempting to destabilize the country's parliament, government and economy through foreign organizations and individuals. BJP member Nishikant Dubey targeted the Congress and raised several questions directed at the leader of the opposition, Rahul Gandhi, in the Lok Sabha on Thursday. ये विपक्षी पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है, मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा ये है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। Soon as the matter was raised in the Lok Sabha, opposition members started sloganeering and obstructing the business of the House, which led to adjournment first till 2 p.m. At 2 p.m., when the lower house reassembled, the Parliamentary Affairs Minister appealed to the opposition to adhere to what had been decided in the Business Advisory Committee meet. कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सदस्यों का यह व्यवहार ठीक नहीं है। हम लोग ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर बिल पर चर्चा करने का समय भी तय किया गया था और कल रेलवे पे चर्चा भी बहुत अच्छी तरह से हुई है। आज रेल मंत्री को जवाब देना है और जहां तक 0 आवर का सवाल है, स्पीकर साहब ने कहा था कि उनका भी मुद्दा सुनेंगे और इस तरफ का भी मुद्दा सुनेंगे, लेकिन उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन करके संसद के अंदर आया। नियम जो मिलकर के बनाया था कि हम प्ले कार्ड नहीं लगाएंगे और जैकेट वगैरह वो तस्वीर करके नहीं लाएंगे, इन्होंने नियम तोड़ा है। और दूसरी बात, ये पार्लियामेंट के बाहर ये जो रंग बिरंगे जो नए नए कपड़े पहन करके जो उन्होंने एक नया एक फैशन शो शुरू किया है, ये हमारा संसद का गरिमा को गिराता है। इसलिए मैं अपोजिशन पार्टी को खंडन करता हूं, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो BSc में तय किया है, आपके माध्यम से भी कहा गया है, रेलवे मंत्री का जवाब को आज सुनना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा बिजनेस है, आज डिजास्टर मैनेजमेंट का अमेंडमेंट बिल भी आज लिस्टेड है, उसको भी पेश करके सुनने का मैं आग्रह करता हूं। इस तरह का हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। The Minister of Railways, Ashwini Vaishnav, was scheduled to answer to the discussion on the Railways Amendment Bill 2024 that took place on Wednesday. As opposition was unrelenting in its sloganeering after the House reassembled at 2 p.m., the minister could not give his reply.
He again tried after the House reassembled at 3 p.m. But it too was to no avail. The chair then adjourned the House till 11 a.m. on Friday. आप नहीं सुनना चाहते हैं, पूरा देश सुनना चाहता है कि अगर एक रेलवे अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं तो आप नहीं सुनना चाहते। आज एक बिल है, ये बिल इसका जवाब आ जाए, ये कल से चल रहा है। तो सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 6 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on Thursday observed that the largest democracy cannot be allowed to be made dysfunctional. He also said that the House should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious and dangerous to India's sovereignty. Let us listen into what the chairman said. Honorable members, I will give time because, listen to me, this is a very serious issue and we need to have opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This House should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. The chairman on Thursday also appreciated the way India has quite often been the first responder at times of need for humanity in different countries and regions. During COVID, India provided vaccine and medicines to a number of developing and poor countries. India has been virtually first responder when there are issues of earthquake, requirement of medicines, even during COVID. And that soothing input I get from foreign dignitaries calling on me or I calling on them. So that, I think, goes to the credit of this House and the government. As a matter of fact, when it comes to evacuation, when it comes to security on high seas, when it comes to supplying medicine during COVID, now these are the inputs I'm not saying. The people have expressed their gratitude to me and therefore I am sharing with the House. Making an intervention during question hour, the chairman appreciated the achievements of former Chief Justice of India, Muhammad Hidayatullah, who was also the 6th Vice President of India and also served as the acting President of India. Well, to satisfy my very dear friend Jairam Ramesh, in the United States, they brought a serious issue, conflict of interest of advocates. And they wanted to keep lawyers away from Congress and Senate. It was severely debated. Ultimately, it was found that if conflict of interest issue has to dominate, then House will be empty. Because someone will always have conflict of interest. Honorable member, Justice Hidayatullah, honorable members, for your benefit, happens to be the only one in the country who was Chief Justice of India, Vice President of India, and also discharged the functions of President of India without being Vice President or elected President. Something very rare. The BJP criticized the opposition, accusing them of encouraging foreign interference in the Rajya Sabha too. BJP member Sudhanshu Trivedi raised the issue in the upper house. सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर, महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं।
इस संदर्भ में एक रीसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट. A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी. Go ahead. And इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है. और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है. अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021. पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021. उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है. जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन. और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है. पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था. फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है. वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में. मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है. ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया. महोदय मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए. यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए. The Rajya Sabha on Thursday discussed and passed the Bharatiya Vayuyan Vidhayak 2024. The bill provides for regulation and control of the design, manufacture, maintenance, possession, use, operation, sale, export and import of aircrafts. The bill has already been passed by the Lok Sabha earlier. And through this debate, many suggestions which are very, very important for us as a ministry to know. Some of the feedback is very, very important for us to know that has come through all the speakers, and some have maybe crossed the line a little bit and used this debate for their own political purposes. I would not dwell too deep into that because that is something the opposition, it has a right to do it and it keeps doing it all the time, but I'll keep the debate very positive and I'd like to comment on all the important suggestions that have come in. And I would like to start also by addressing the elephant in the room, which is about the name of the act, Bharatiya Vayuyan Vidhayak. I also understand that it might be a little difficult thing to pronounce for a lot of people. गले में अटकता होगा ये, पर कोई शर्मिंदा की बात नहीं है इसमें. कोई ये ऐसे वो शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है. This is something you have to know the intention with which the government has put this name. That is ये है कि भारत की जो विरासत है, संस्कृति है, जो पहचान है, उसको दिखाने की, दर्शाने की एक प्रयत्न ये 3 वर्ड अभी रखने की है. इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कहीं पे भी नहीं है. Sir, I now move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it.
the bill is passed. Proceedings in the Rajya Sabha began on Thursday with the chairman greeting members who had their birthday on the day. Chairman Dhankar extended birthday greetings to members Rajni Ashok Rao Patil and Subhash Barala on Thursday. Honorable members, pleased to extend greetings to honorable members of Parliament, Srimati Rajni Ashok Rao Patil, and Sri Subhash Barala. On their birthdays today, Srimati Rajni Ashok Rao Patil is currently serving her second term in this House since September 2021. She has earlier served as member of this House from 2013 to 2018. Joining electoral politics in 1992, she came to be elected to the Bid Jila Parishad and later in 1996, winning the Bid Lok Sabha constituency. She hails from a renowned family of freedom fighters. Her grandfather, late Shri Vishnu Ganesh Pingle, was a founding member of Gadar movement, and her father, Shri Atmaram Bapu Patil, a distinguished freedom fighter, was elected as a member of Central Legislative Assembly in 1937 and was later also elected to the Maharashtra Legislative Council. Srimati Rajni Patil holds a BA in German language from the University of Pune. Over the years, she has represented India at various international fora, including the United Nations. Married to Shri Ashok Patil, the couple is blessed with sons Aditya and Amit and daughter Tejaswini. Honorable members, on my own and your behalf, I wish her long, healthy, and happy life. Shri Subhash Barala, in his first term in this August House, representing the state of Haryana since April 2024, has also represented Tohana constituency 2014 to 2019 in Haryana Legislative Assembly. Shri Ramnath Educational and Welfare Society, an organization founded by him, is taking commendable initiatives in welfare activities in rural Haryana. Shri Barala was president of the BJP in Haryana 2014 to 2020 and also served as chairman of Haryana Bureau of Public Enterprises from 2020 to 2023. Married to Srimati Darshana, the couple is blessed with son Vikas and daughter Tamanna. Honorable members, on my own and your behalf, I wish him happy, long and healthy life and extend greetings to his family members. That is all we have in this episode of House Highlights. We will keep you abreast with further developments during the winter session of Parliament. Keep watching Sansad TV. Good night.